हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। मैं हूं रुद्रांशु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से लेकर आ गया हूं दी वॉकिंग डेड सीजन 1 का एक और एपिसोड अपनी वही बेहुदा कमेंट्री के साथ, जिसे सुन के तुम लोग वीडियो बीच में से ही छोड़ के भाग जाते हो। पर मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा भाई। यार मतलब इसको मैं रिकॉर्ड कर करके पागल हो गया। ये भाई मेरा 6th टाइम है भाई। 5 मतलब पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डर में क्या हो रहा है। अगर भाई ये इस टाइम भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं फ़ोन तो नहीं फेंकने वाला, पर हाँ स्क्रीन रिकॉर्डर चेंज ज़रूर कर दूंगा। I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot this night. भाई मैं इसको वैसे भी 5 बार पहले से इसे रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए भाई मुझे सारे ऑप्शंस पता चल गए हैं कि मुझे कौन से क्लिक करने चाहिए। एक तरह से बोल सकते हो कि रट गए हैं। Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? भाइयों यहाँ से अकेला छोड़ना अच्छा नहीं है। I won't leave you alone. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Hey man! मुझे लग ही रहा था कि ये लोग डर Don't eat जाएंगे। us. We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. भाइयों मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे रट चुके हैं। Trying to get home. This neighborhood's a disaster. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen anything as gnarly as this neighborhood since downtown Atlanta, 15 miles back. I'm Sean. Sean Green. Lee, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. अबे डैडी बता देता अपने आप को, पर हाँ फिर बच्ची का प्रॉब्लम है, क्या पता वो सच बोल देती। Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? Them monsters come out. We gotta go. Lee, quick. Let's go. अबे तू उससे क्या बोल रहा है? उसके एक पैर की तो नैया वैसी डूबी रखी है। वाह टफ गाय है यार। मतलब पैर में चोट लगने के बाद भी यार मतलब ये कार को हिला दे रहा है। मतलब भाई जब जान बचानी होती है ना तो भाई ये सब करना ही पड़ता है। फिर सर्वाइव भी तो ऐसे लोग कर पाते हैं। अबे ये कहाँ से बैठ गया? लगता है इसका अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। अबे इसको ड्राइविंग लाइसेंस किसने दे दिया? इस पीछे वाले की तो फटी पड़ी है यार बुरी तरह से। मैं अभी पूछा उसको ड्राइविंग लाइसेंस आखिर दिया किसने? वैसे इतने बुरे माहौल में ड्राइविंग लाइसेंस देखेगा भी कौन? भाई इसमें मतलब मॉन्स्टर से फाइट करने को मिलेगी कि नहीं, या फिर हम लोग बस ऐसे ही बतियाएंगे फालतू का? Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Thank God you're okay. अबे ये बुजुर्ग कितने बुरे माहौल में जिंदा कैसे है? As usual the past couple days. Well, Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. हाँ सर, मेहमान ही रात को सोने के लिए जगह मिलेगी। Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. हाँ इसके पैर में शुरू से ही जीना हराम कर रखा है। It's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have.
Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. अब अंकल जी मुझे तो चोट लगी नहीं तो मैं बता तो नहीं सकता, पर भाई इसने इस हालत में कार को धक्का Not दिया too है। bad. Tough guy, huh? What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. ओह व्हाट अ नेम अंकल, हर्षल हरा। भाई अच्छा सर How'd नेम है। this happen? Car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl? भाई कितनी पूछताछ I करेगा was ये। with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there. We're done here. I didn't get your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. क्यों मजाक कर रिया है भाई? We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and such in the barn. We'll be seeing you bright and early. Come tomorrow, which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. भाइयों ये मुझे एकदम पूरा पार्ट ऐसा रट चुका है कि मैं आँख बंद करके अब मैं मतलब ऑप्शन क्लिक कर सकता हूँ। अब भाइयों मतलब 5 बार एक ही चीज को रिकॉर्ड करने का मतलब कुछ तो असर होगा ना मेरे पे। स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ये मेरा 6th ट्रायल है। It smells like आई नो कि इसे गोबर की स्मेल आ रही होगी। Manure. manure? Like when a horse plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. ओके तो ये किसी औरत की आवाज़ है। आई थिंक ये अपनी वाइफ को ये अपने सपने में देख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसने अपनी वाइफ का ही मर्डर किया था इसलिए ये प्रिजन जा रहा था। एक तो यार गेम में हमें इसकी हिस्ट्री नहीं बताई गई है तो हम बस गैस ही कर सकते हैं। Hey, get up. अरे चचा जी आप यहाँ कैसे? I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. शुक्र है नहीं तो बाल But I काटने bet your पड़ते। daddy scared them all away, huh? I'm not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. अबे मैं तो तंग आ गया हूँ। मैं जब भी गेम पे रिकॉर्ड करता हूँ हमेशा बैटरी लो हो जाती है। Nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! But he makes up for it with enthusiasm. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. यार मैं सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी ट्रांसलेट करने का वक्त ही नहीं मिलता Sure, इसमें। we'll tag along. It's a plan then. शक्ल देखो। Duck, this is Lee. And what's the girl's name? Clementine. Clementine.
That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the अबे tractor? इसे ट्रैक्टर पर मत बैठा। Duck and मैं I will ऐसा hop क्यों to it. बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. अब भाइयों में जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी सबसे बात करते हैं। Hey there, girls. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. ओ बंदी टॉपर है भाई। How's that? अगर ये मैंने पहली बार सुना होता तो शायद मेरे बोलने का ढंग अलग होता, पर भाई मैं इनकी इस बकवास सुन सुन के पक चुका हूँ। फिलहाल मैंने तो अपनी क्लास में कभी टॉप नहीं करा। It's almost like we didn't see people eating each other for the past 3 days. It's peaceful here, no? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people over some. अरे आंटी जी रहने दीजिए, रोइएगा It's मत। okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the भाई यही वो अशुभ जगह है जहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाता, पर भाई इस बार नहीं करा। मतलब मैं ये पार्ट पूरा कर सकता हूँ इस बार। Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. all of those things? Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. अबे मैं तो We इसे need to स्कूल hope टीचर that we समझ can रहा go था। back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Back in a bit. अब Okay, Lee. जरा इन मोहतरमा के पति देव प्राणनाथ से भी बात कर ली जाए। ये रहे इनके प्राणनाथ। आइए, कुछ है आपके पास बात करने के लिए? Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? Well, I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? भाई तुझे क्यों उस लड़की की इतनी चिंता हो रही है? भाई अगर तू सोच रहा है कि ना कि उस लड़की की शादी तो अपने बेटे से करवाएगा तो रहने दे। मैं उसकी शादी तेरे इडियट लड़के से तो बिल्कुल नहीं कराने वाला। लेकर आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मैं जिंदगी खराब कर दूँ। I have no idea what I'm doing. At least you're honest. Shit. Better than I was when Duck showed up. You'll भाइयों figure it ये out. मुझे थोड़ा परेशान लग रहा है, एग्जिट ही कर लेते See ya. हैं। चलो अब जगह ये थोड़ी सी घूमी जाए। वैसे तो मैं पहले ही घूम चुका हूँ, पर आप लोग को भी दिखा देता हूँ। पर जिन्होंने एक गेम खेला है, पहली बात तो जिन्होंने एक गेम खेला होगा वो मेरी वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। चलो इन बड़े भैया से बात कर लेते हैं, अकेले काम कर रहे हैं, कोई हेल्प वेल्प चाहिए कि नहीं? Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. सही है, चलो वैसे भी खाली ही बैठे थे। My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? भाई ये हमसे पूछ रहा है? हमारी तो इस गेम की शुरुआत ही एक पुलिस वाले को ठोक कर हुई है। To shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? My brother and parents are in Macon. I hope. Oh man, I hope so too.
Maybe it's not too bad there. ऐसे माहौल में इसकी फैमिली जिंदा भी होगी ये जो That's पूछ रहा probably है? all I need cut for now. Thanks. And Sean, thanks again for the ride. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. भाइयों अब मुझे लग रहा है कि इसके पिताश्री से भी थोड़ी सी बकवास करनी पड़ेगी मुझे। भाइयों मैं ज़ॉम्बीज़ को शूट करना चाहता हूँ, ना कि मैं ऐसे बतियाने में अपना टाइम वेस्ट करना चाहता हूँ। यार कैसा गेम बनाया है यार ये। भाई स्टोरी गेम्स में से बतियाना ही थोड़ी ना होता है। सोचो ये एक ज़ॉम्बी गेम है और मुझे अभी तक एक पिस्टल नहीं मिली। How'd you get out of Atlanta? I was on my way out anyway. Timing of all this just happened to be right. If there ever is a good time for the supposed apocalypse. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? पेरेंट्स का तो पता नहीं और वाइफ को शायद इसी ने मार दिया है। My parents are in Macon. Was my brother. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? इस समय मुझे स्टोरी के बारे में कुछ नहीं पता तो ऑफ कोर्स I एडवाइस don't know चाहिए। who you are or what you did, but you better become a better liar, and fast. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. वैसे से पता कैसे चला कि हम अभी तक आता झूठ और आता सच बोलते हुए आ रहे थे कि इसने हमें लायर बोल दिया ऐसे ही। But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. आ गया वो समय जिसका मुझे इंतजार था। अब शायद किसी एक ज़ॉम्बी को मारने को मिलेगा। I'll get my gun. भाग तो एक्शन हीरो की तरह आ रखा है, टांग एकदम सही हो गई इसकी। ओ भाई वक्त आ गया पर भाई मेरे पास गन तो है ही नहीं है। अरे भाई पकड़ लिया इसको। और एक मिनट रुको भाई, इसको भी काटने के लिए आ रहे हैं। मतलब एक मिनट, मुझे दोनों में से किसी एक को बचाना है। अबे किसको बचाऊं? एहसान फरामोश के बच्चा क्या करूं? एहसान फरामोश बन जाऊं? नहीं यार, इसने हमें बचाया था। ऐसा करता है कि पहले इसको बचा लेते हैं और फिर बाद में मिलकर बच्चे को ही बचा लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे मैं कह रहा था इस बच्चे को ट्रैक्टर पे मत बैठा। चलो भाई, इसने तो अपने बच्चे को बचा ही लिया तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अबे बेवड़े कहाँ भाग रहा है? अरे बच्चे को अपने साइड। अबे क्या बकलोलपंती, मतलब छोड़ गया वो। भाई अपने बच्चे को साइड में बैठा देता और फिर बाद में मदद भी कर देता। ए भगवान, अबे कौन सी जगह मिली उसे काटने के लिए? ए भगवान, भाई इसके बुढ़ापे का सहारा तो कुआरा ही मर गया। भाई मैंने कोशिश करी थी इसे बचाने की। ये सब उस कहने की गलती है। I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you. Don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. चलो मरते मरते कम से कम इसने मेरा पक्ष तो लिया। नहीं तो क्या पता इसके पिताजी मेरे पे ही बरस जाते कि भाई तुमने मेरे बच्चे को नहीं बचाया, मेरा बच्चा तुम्हें बचा के लाया, कि रात को मैंने तुम्हें सोने के लिए जगह दी। बस हाँ, रात में तुमने खाने के लिए मुझे खाना नहीं दिया यार। Get the fuck out of here! हाँ चिल्ला, इसके नहीं पे सब इसकी गलती है। Sorry. Your son is alive. You don't get to be sorry. सही बोल रहा है You एकदम। tried to help him, but this piece of shit let him die. मतलब मैंने शायद ठीक ही ऑप्शन मैंने चूज किया था शायद। I wasn't strong enough.
मन तो कर रहा था कि मैं उसकी फॉल्ट बता दूं, पर क्या करूं यार, If your दया आ गई girl मुझे is उसके ever ऊपर। trapped, you better hope you get stronger, or your friends aren't cowards. Please, just go. Get out and never come back. देख क्या नहीं, तेरे चक्कर में इतनी अच्छी जगह निकल गई हाथ से। अब कहाँ भटकेंगे। वैसे यहाँ पर गेम चालू भी कैसे होगा जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। You've got that ride to Macon if you want it. पर तब भी यार इसका बच्चा तो बच ही गया था ना, बगल में रख देता। वो कौन सा ज़ॉम्बीज़ के पास वापस जा रहा था, इसको भी बचा लेते। पर यार अब जो स्टोरी में लिखा होगा वही चलेगी। सो फ्रेंड्स, आज का कोटा यहीं समाप्त होता है, और मुझे पता है मेरी तरह आप भी काफ़ी बोर हो गए होगे अगर आपने एंड तक देखी होगी ये वीडियो तो। Well, this is as far as we're going. And it's far enough. अब तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट रहेगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तो अब बस मतलब यहीं पे रखते हैं, पर हाँ रखने से पहले कुछ दिखाता हूँ आपको। मैंने इस गेम के सारे एपिसोड परचेज़ कर लिए, मतलब मैं इस गेम को पूरा खेल सकता हूँ। तो अब बस इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय टाटा, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड हाँ प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना यार, और हाँ अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। सो बाय।